Hello, 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 hello. Are we live, my friends? Yes, looks like so. तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और लाइव स्ट्रीम में, जहाँ पे वी आर कंटिन्यूइंग विद अवर साइड प्रोजेक्ट RY Monk, our प्रोजेक्ट, राइट? तो अप टू नाउ हमने ये सब कर लिया है, राइट? एडिट, मेक अ कॉपी, मूव टू ट्रैश, मल्टीपल डिलीट्स, राइट? हमने कर लिया है. Now all we gotta do is today the primary task is to deploy a save button here to save all the changes in the our portfolio, and get these cards done, right? So we'll start with the card part and then we'll move towards the save button part. All right, cool. So let's start from here itself. Let's create a utils folder where we have portfolio calculations, right? And of course .js, so that yeah, यहाँ पे हम करेंगे पोर्टफोलियो की सारी कैलकुलेशंस, बेसिकली जो भी पोर्टफोलियो पेज पे कैलकुलेशंस होंगी वो सब, और एक हम रखेंगे डैशबोर्ड्स के लिए कैलकुलेशन के लिए, राइट? तो एक्सपोर्ट फंक्शन एंड टोटल इन्वेस्टमेंट, रिटर्न 0 फॉर नाउ, राइट? नाउ अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे पोर्टफोलियो का नाम पास कर देंगे, राइट? एंड हम उसी हिसाब से यहाँ पे वो दिखा सकते हैं. हाउ डू आई पुट इट फॉर यू, लाइक लेट्स से यहाँ पे वी गॉट पोर्टफोलियो id, let's do with id, right? And let's say we get portfolio id. तो अब हमें चाहिए यहाँ पे सारे ट्रांजैक्शंस whatever are associated with the get transactions में पोर्टफोलियो नेम है, पोर्टफोलियो नेम कर लेंगे यहाँ पे हम. करेक्ट, मेक सेंस. तो यहाँ पे हम कर लेंगे गेट ट्रांजैक्शंस बाय पोर्टफोलियो नेम से मैं पोर्टफोलियो नेम पास कर देंगे और यहाँ पे हमें मिल जाएगा कॉन्स्ट ट्रांजैक्शंस एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन कर देंगे, ऐसे हम कर देंगे अवेट. ऑल राइट फ्रेंड्स, दैट मेक्स सेंस, दैट मेक्स सेंस, राइट? तो इसके बाद जब हमें ट्रांजैक्शंस मिल गए तो अब हमें चाहिए रहेगा, सॉरी, कि हमने कितना इन्वेस्ट किया है इसमें, राइट? तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, you know we can use reducer or we can just do it simply. Let invested amount is equals to transactions you know transactions dot data
dot for each transaction if, I mean, not even if, let's just console it for the moment. Transaction, and we can just call this in our portfolio page. Uh, you know, yep, yep. Const total investment is equals to investment, और यहाँ पे हम दे देंगे portfolio name as a prop, and let's just see. Let me refresh it, और हमें बहुत सारा कुछ मिल गया. उन्हें ईमेल नल क्यों आ रहा है? बहुत सारा कुछ एक साथ हो गया. In that case, what I think we can do is, let me just delete this, done. Reload, not even reload, let me just go to sign in. Let me just sign in. And now if I go to portfolio, I don't know, give me a name, 0 1 1 2. So hopefully this should not break. Cool. तो अभी बहुत पीछे हम. Let's just go for the first one. Shift I. Okay, so that is being rendered on the client. But client पे I guess async वाला चीज नहीं होता है ना? I mean, I don't know. Let's see. If type is equals to dr, if type is equals to dr, then only we are gonna do an invested amount plus equals to क्या? Amount. And I can just delete this and delete this, maybe. Yeah, remove this and return the invested amount. And whatever I get here as in total investment, as a total investment, I can just simply give it to the total investment card. So, yep. And instead of card content, I'll just put a dollar, of course. Total investment. Hopefully, we should be able to see something here. Okay, we have a bad set state,
but we'll look into it later क्योंकि अभी it was working dudes. Type is not defined. Okay, I just realized it should be transaction dot type and transaction dot amount, and hopefully this should work. Now cannot access before initialization, another dump error. Yes, is equals to 0. Home, delete, enter, save, refresh, and now hopefully there shouldn't be any error, but still there is. I don't understand what the error is. Cannot read properties of undefined. This all should be on user server, and it needs a hard refresh after this. That is correct. No, अब क्यों डेटा नहीं दिखा रहा भाई? Is that because of all these use memo? Use memo. Now hopefully this should work fine. In mean, I'm still not sure because यार ये re-render हो रहा है बहुत बार for some reason and I'm missing something pretty basic.
डैशबोर्ड खोलेंगे, ये भी है। पोर्टफोलियो पी 00112 it started again, didn't it? कुछ तो बहुत बेसिक सा मिस कर रहा हूं मैं, और मेरे को समझ नहीं आ रहा है वो। ना बेसिक सा है वो, मैं क्या बताऊं। देखो दोस्तों, अभी क्लिक नहीं हो रहा है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू ऑल, so we'll go back to what, wow, crashing like hell. Some reason it was crashing by a lot, but ठीक है, चलो, we can do other things, जैसे कि नेट रेवेन्यू, है ना, and we'll do this net revenue again, same thing, portfolio name, fetch all the transactions of that portfolio. You know what, if I'm doing the same thing here, you can see, right, doing the same thing here. What if I just send this only, you know, transactions, and if I just control C, control V, then I would not need
this at all. I would probably won't even need this. I won't need this. I need this. Won't need this. Transactions for each. This would be much simpler in this case. And I would probably try doing this as well. I mean, why not? And that would throw an error ke haan, so I'll do this. Cool, and yes. So if I just add 12 and 123, it would be 135. Makes sense. And hence, so I don't need to stress about anything else. I can just simply do this, right? Now, similarly, I'll do Control Shift Home, enter uh, net revenue, right? Let net revenue and investment or amount, total investment, but with small t. If CR net revenue, yeah, and net ROI. Now, how would you calculate ROI? That's the bigger question. ROI is how much you get. I mean, ROI formula. Net profit upon investment into 100, right? Net profit upon investment. तो मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, तो it would be like, if I'm not wrong, just delete this. Let net ROI is equals to net revenue minus transactions. Net total investment transactions upon total investment transactions star 100, and then we'll return net ROI. Now we can just do simple let net revenue is equals to net revenue transactions to simplify this. Total investment annualized ROI formula.
I did not get it. तो हम इसे बाय डिफॉल्ट 1 मान के चलेंगे, तो दिस वुड बी 1/1 की पावर 1, तो 1 प्लस, तो फिर आर वाई ही आ गया ना, ये 1 हो गया, तो 1 प्लस माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, 50% ही हो गया, 50% ही हो गया। तो अब एवरेज रिटर्न्स की बात करें क्या? कहीं था ना एवरेज का, पहले वाले पेज पे था। कैन जस्ट गो हियर, सर्च फॉर एवरेज। Okay. Can do one thing, but फिलहाल के लिए let's do one thing. I do have an idea, but चलो सब बाद में रखेंगे, आज के लिए रखेंगे। Let's just decommission few things. इन तीनों को हटा देते हैं, and the very same time we will have to decommission this as well for now, because अभी सिर्फ हम एक साल का ही रेवेन्यू दिखा रहे हैं। That will be the same, very same thing, not a number, percentage. Very good. -100%. तो समझ रहे हो दोस्तों? Now what if I add, but add का तो ऑप्शन ही नहीं है, और जस्ट रियलाइज कि इसमें ऐड का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो ऐड ट्रांजैक्शन भी करना ही होगा, राइट? तो ऐड तो करना ही होगा, और हम सिंस वी डोंट हैव 4 cards, we can just do
this. And this. तुम हो तो लगता है कि मिल गई हर खुशी. Wow. So we need to do a add button as well. यहाँ पे to add the transactions और उसे उठा के ले आएंगे हम वहां से पूरे डायलॉग को. But for now this is working. And if I am not wrong, same thing can work at the dashboard. Let me just go to the dashboard once. नहीं बट यहाँ पे मेरे को सारे पोर्टफोलियो के वो करने होंगे. Well, I'll have to recall it for each. That's that's trickier, I would say. So 100% सारा ही पर्स वो हमारा इन्वेस्टमेंट में है. रेवेन्यू is greater than 0.5 क्यों भाई? Okay, I remember. Is greater than 0. Greater than 0. तो ये रहेगा. और net revenue is smaller than 0. तो ये रहेगा. If it will be a 0, nothing will be there. वो similarly will do with ROI. It will be greater than 0. Correct? Makes sense? Makes sense. So let's quickly push it. Okay, source control को इतना टाइम कब से लगा क्या भाई? तो feet portfolio card calculations. I'll add this. I'll add this. I'll commit and push. User.js में there's a little fix. If no user edge case and commit and push. Come here, close. Not all. Let's just close this. Right. And now we have to put you know, three buttons. Basically, two more buttons. One is add and one is search transaction name के parallel मेरे को रखना है. That would go here, right? And I'll just save, right? Refresh, yes. And I want one more button which will call for save. And since this is justified between, I would do a div. I would add all three of them in this div. I'll put class name as flex gap
x 2 at save delete. Makes much more sense. How do I do a shed cn button? Yes. Want a ghost? No, I want a destructive. और delete है ना, एंड प्राइमरी तो मेरा उसमें हो गया, उसके लिए ऐड के लिए और सेव के लिए इनफैक्ट बस ऐड के लिए हम क्या कर सकते हैं, यू कैन जस्ट डू सेकेंडरी. All right, we'll do this. Save करके hopefully we should be able to see something. Something मेरी जान कर ले हमसे. Cool. Makes sense. तब हमें इन दोनों के ऐड और सेव के इवेंट हैंडलर्स खोल डालने हैं. तो उसके लिए अब हम जाएंगे क्रिएट न्यू में page.js6 और that's a lot. So we'll go for alert. Hi. Okay, sorry. वहीं से आ जाएगा पूरा. Sorry. And I'll just cut this. Put it here. Trigger में. और यहाँ पे जाके इस सब उठा लेता हूँ इनफैक्ट. सब की जरूरत भी नहीं है फिलहाल. ये उठा के चलते हैं. सेलेक्ट इतना. Let's see what else would be required. कैलेंडर रहेगा एक तो, पॉप ओवर भी रहेगा. Split right. Let's just do this way. Pop over calendar icon, कैलेंडर इतना उठा के ले चलो फिर. अब भी कुछ रह गया. टेक्स्ट एरिया. Alrighty, right. And if I am not wrong, तो अब एरर आएगा कि ये सब चाहिए, राइट. ओपन फंक्शन. यस.
Let me just put it like this. और फॉर्म चाहिए रहेगा, और ये हो गई भसड़ चालू। इसमें हो गया यहाँ लंबा चौड़ा, मतलब ideally you should not have these many big files in a single place, these many lines of code in a single place. Add transaction. अब add transaction तो यार बहुत लंबा चौड़ा है, but चलो let's for now create a simple here int handler यहाँ पे। console log values, one error, nothing, another error, क्या है ये हाइड्रेशन होगा, like just be okay। दोस्तों आप मुझे 1 सेकंड का टाइम दो, I'll just right be back। Yep, so we are back। हाइड्रेशन एरर टेक्निकली होना तो नहीं चाहिए दोस्तों, बट ठीक है, लेट इट बी। तो अपना ये हो गया, राइट। नाउ वी नीड टू क्लोज दिस फर्स्ट, क्लोज दिस, क्लोज यू। जहां इतने सारे हैंडल कर रहे हैं, यहाँ पे एक और पे कॉन्स्ट हैंडल ऐड ट्रांजैक्शंस, वैल्यूज आएंगी हमारे पास, हम यहाँ पे लॉक करेंगे, इसको हम पास कर देंगे यहाँ पे, और इसको डिलीट करके हम आएंगे यहाँ पे, कॉमा पेस्ट, handle a transaction, let me just go there, add debit, T1 तो नहीं करेंगे, T1 yes 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 करेंगे,
at at ooh, right. So again we'll go here, we'll see हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे at ट्रांजैक्शन में, ऐसा कुछ, राइट। हम यहाँ आएंगे, होम पे जाएंगे, हैंडल एट ट्रांजैक्शंस में ट्रांजैक्शन and after this सब के बाद हम कर देंगे सेट ओपन को false. So hopefully when I click on this, something should happen. Nothing happened. We'll just simply refresh. We'll get hydration error, which should not be there ideally, but it is here. We'll do a credit 123 ka. In fact, 135 है, right? Let's see some profit on 13th of year, and we'll just add. That is technically bad. That is technically bad. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये ROI क्यों आ? अच्छा, great 159. Yes. ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? I don't understand. A button cannot be a SMS because a hydration error. First thing is, button cannot be a this thing. Button. Then फिर मैं create new पे जाके nth कर रहा हूँ. Wow, something went wrong. Just went wrong. That's not very good. Lots of issues. Lots of issues at once. Shit. दोस्तों एक काम करते हैं, आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं. As you can see, we are going through a lot of issues. So what I'm gonna do is, I'm gonna merge whatever code I have in this branch. That is my current branch server, right? जो भी server branch पे ये सब मैं merge कर दूंगा, है ना? In my main code, in my main branch, and then I'll create another branch, you know, named something optimization or something, and then there I'll code for few 1-2 hours, 2-3 hours in a private, silent quiet room, and then there I'll code and optimize the whole code base once, because it's like uh, building on top of bad code and then more bad code and then more bad code, and now we are like in bad code hell. So it's not helping us to reach anywhere. So that's what I'm gonna do.
I'll optimize it. I'll show once optimized. I'll make you walk through it once or twice. अगर आपको कुछ doubt रहेगा, so you can ask in the chat, right, or in the comment section, or probably I'll make a video or something about it. And then once I do that, we'll continue coding from there onwards, right? We are almost there. We have to do these two from buttons functionality, then this search, and then we'll have to build the dashboard. That's just one or two streams kind of thing. And yep, after that we are pretty much good to go. For some reason this also breaking. I mean, I know why this is breaking because we changed the definition of columns, right? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट स्ट्रीम में जब हम ये चीज कर चुके होंगे, ठीक है? तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, चलो।